overutilize AI in doing their routine tasks. So you have to take it as an analytical tool and then utilize it to perform things in a better way. Thank you very much, sir. Our next participants for response in the response of this question. How do you perceive the impact of digitalization on the future of employment workforces? Dr. Amir Firoz Shamsi sir, your response is required. Am I audible? Am I audible? Okay. The matter of fact. On the mic, it's on. Yeah, it's on. Am I audible? Yes, you are. The matter of fact, when we talk about humans, one of the biggest and most important characteristic of humans is adaptability. I give you two examples. Since I belong to Resea University and I have experience of dealing with people who are in the forces. This is the talk of the town among the officers at senior positions, how to deal with Generation Z. And when you talk about Generation Z, the connotation is that they are very much closely associated with technology. So one thing is there, that what the generation we are talking about, not only today but in the future, and the matter of their day-to-day routines is closely associated with technology. So one thing is there, it's not only the matter of employability, but it's the matter of day-to-day life. The technology has become part and parcel in our lives. Almost 1 week ago, I had an opportunity to make a visit to Resea Industries. And the head of Group HR, I had meeting with him, and he was saying bluntly that when we conduct interviews of the newcomers in the industry, and when we ask them, to certain extent they are good in terms of academic background, but when we ask them in terms of technology and the adaptability of these graduates of universities, we find gaps. And I tell you, he said to me, and I tell you, people talk about unemployment, but there is need of employment, but actually the right workforce is not available. So highlighting these two examples, I want to emphasize that जिसे कहते हैं ना इंसान की जिबिल्लत है, adaptability. And if we do not adjust ourselves with the technology, not only in our personal lives but in the careers as well, we cannot actually pace with. So that's my point. Thank you. Sir, thank you very much. Your valuable insight regarding this most important topic. Now I request Madam Zabala Yasir that please to put a highlight on this important question, that what is the impact of digitalization on the employment workforce. अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में जो सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि मैं जब यहाँ पर स्टूडेंट्स को देख रही होती हूँ कि जिस तरह से एआई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्सेप्ट पीछे से क्लियर होने चाहिए। अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स नहीं है और साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, तो हम एआई का इस्तेमाल करते हुए ये डिफरेंस नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और विच इंफॉर्मेशन इज़ रॉन्ग। तो जैसे अभी मिस फायज़ा जो कहकर गई एक बात कि रोबोट्स हमें रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी वजह यही है कि हम ही वो लोग हैं जो रोबोट बना रहे हैं, और उसके बाद जो है वो हमारी जहानत जो है वो उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। तो
तो अगर वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो चीज़ें नहीं हैं, तो फिर आप जो है वो उसका डिफरेंस नहीं कर सकते। तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने के बजाय हम उसको एज अ टूल इस्तेमाल करें अपनी बेहतरी के लिए और ह्यूमंस की वेलबींग के लिए। मेरे ख्याल में ये क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you very much, madam. And our next participant is Dr. Sarwar. Madam, what do you perceive about the impact of digitalization on the workforces? Please, you are valuable. Thank you so much for the question. डिजिटलाइजेशन जब हम बात करते हैं इसकी कि वर्क फोर्स के ऊपर इस वक्त उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये क्या वर्क फोर्स को हमारी पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, क्या डिजिटल टूल्स एक्चुअली यूज़ करने आते हैं कि नहीं। यू नो दैट्स द फर्स्ट थिंग, डू यू नो हाउ टू यूज़ दीज डिजिटल टूल्स। सो डिजिटल टूल्स आर नॉट ओनली चैट जीपीटी। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये, हम लोग ये समझते हैं कि डिजिटल टूल का मतलब है क्लॉड या चैट जीपीटी बस, ठीक है। देयर आर जिलियंस ऑफ डिजिटल टूल्स, ठीक है, देयर आर जिलियंस ऑफ एआई टूल्स, और जितने भी एआई टूल्स हैं वो डिफरेंट अरीना के अंदर डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, number one, we should know how to use those tools in our own platforms, in our own arena, in our own field of interest, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वर्कफोर्स के लिए। इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को अगर कोई आर्किटेक्चर में है, अगर कोई एजुकेशन के अंदर है, अगर कोई इंजीनियरिंग के अंदर है, द टीचर्स शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम एआई, ठीक है। एआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाय अल्लाह किसी ने यूज़ कर लिया तो ये चीटिंग हो गई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यू शुड नो हाउ टू यूज़ दीज टूल्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स, बिकॉज यू सी आप इन्हीं टूल्स के थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग भी अपनी डेवलप कर सकते हैं, आइडियाज़ भी डेवलप कर सकते हैं, इनोवेशंस भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग the digital tools, not only by the students but also by the teachers themselves, okay, so they need to actually come to the point where they can understand these tools first and then teach them to their students, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरी बात ethics of using these tools, ये भी दूसरी बहुत एक important चीज़ है। so if you're using these tools, उसकी boundaries क्या हैं, plus if you're actually using them, are you going to tell your boss that I made this thing using the digital tool? Yes, you are, because this is what the ethics tell us to do. Tell the other person where you've got what you've got, ठीक है। so यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, usage and ethics, and I think इस वक्त बहुत ज़्यादा important है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर करें कि किस तरह से हम लोगों ने ये, बिकॉज यू सी इट्स अ स्किल, ये एक हुनर है, ये एक फ़न है, टू बी एबल टू यूज़ दीज डिजिटल टूल्स, कि हम लोग स्टूडेंट्स को ये सिखाएं कि आपने किस तरह से इन टूल्स को टैप करना है, इनको यूज़ करना है, इनको हार्नेस करना है और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है, रिमेनिंग इन द बाउंड्रीज ऑफ एथिक्स। Thank you very much, madam. Now it's time to ask the questions. First of all, try to understand the question. This question pertains to you people, that what is the impact of digitalization on the future workforce at a global level. But I hope that we all are I think the citizens of the Pakistan, keeping in view the miserable realities of the Pakistans. What will be the impacts of digitalization on future workforce? Do you expect that there will be any shift, there will be any change, there will be any radical changes? You may ask questions from any participants. Just 3 questions from audience, please. सर मेरा सवाल ये है कि जहाँ तक हम एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई का तो होना वैसे ही लाजमी है आजकल के जदीद दौर के लिए, तो हम एआई को तो अपने यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में ला रहे हैं, क्या हम साथ साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो है ना अपने दीन का जो जैसे होता है कोई दीन को अपने अंदर ला सके यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे अभी हम
शुरू ही नहीं कर रहे कि किसी तरह का जो दीन है, इस्लाम है या इस्लामी तालीमात है उसको हम यूनिवर्सिटी में लाएँ। वैसे यूनिवर्सिटी में तालीमात तो हैं दीन की, लेकिन इस तरह की जिस तरह की हम AI को यानी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर हम दीन को जो प्रमोट नहीं कर सकते कि जो है ना AI के साथ साथ अपने दीन को भी प्रमोट करें। Please, your question is from which participant? Good question. We are living in a society in Pakistan where we are fully associated with the religion and you see religious activity all around. And AI is in high demand. So why not people can use AI and tools to learn what religion teaches you, what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says. So yes, there are tools available that you can utilize to explore things, learn things. If your pronunciation while reciting Quran is not good, not appropriate, there was a time when we used to go to madrasas to learn Quran. Now you can sit at your own place. You can go onto a website called Quran WBW, suppose, that gives you word by word translation. Searching from the Quran is not difficult. For example, you are searching a word mosquito or donkey or dog maybe. So you just write a word and that quickly can be extracted with the references where that word has mentioned in Quran. So there's not just one website. There is Quran WBW, then QuranExplorer.com, and with that there are many other websites available. But the problem is not that you don't get information. Problem is you get too much information from the internet. So you have to check which information is more relevant or true, authentic. So you can use Islam 360 and the website names that I've mentioned, because these are the authentic websites. And if you are using any other tool, you have to check the details of the scholars who have approved it, so that you can say that yes, that information is authentic. A good question of yours. I hope that answers the question. Any question from this patient? Mic. अच्छा ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान है, मैं BS फाइनल ईयर EDU की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ही है, हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, AI की, लेकिन क्या हमें इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज अभी नहीं देखनी चाहिए? हमारे पास बिजली नहीं है जो हम AI टूल यूज़ करेंगे, हमारे पास सिग्नल नहीं है, वाईफाई है, सिग्नल नहीं आते। इस सिचुएशन के अंदर हम AI और फिर ट्रांसफॉर्मिंग की बात करें तो आपका क्या ख्याल है? मतलब हम किस हद तक जो है वो अपनी सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं? रिस्पॉन्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हमारे पास तो इस वक्त बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं, तो हम लोग इस वक्त AI की बात कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि दुनिया आपका इंतज़ार नहीं करेगी कि पहले आप बेसिक फैसिलिटीज़ ले लें, उसके बाद जो है ना नई इन्वेंशन आए। इन्वेंशन इज़ देयर, ठीक है, इट इज़ देयर, यू यूज़ इट और यू डोंट यूज़ इट, ठीक है। बिजली पैदा करना या आपके जो अपने घर के मसाइल हैं उनको सेट करना, तो ये आपका अपना प्रॉब्लम है ना। या दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू केटर टू, राइट? योर गवर्नमेंट्स नीड टू केटर टू एंड द पीपल नीड टू केटर टू। हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग किसी भी चीज़ के अंदर सीरियस नहीं होते, ना हमारी हुकूमत सीरियस होती है, ना हमारे एजुकेशनिस्ट सीरियस होते हैं, और ना ही हमारे स्टूडेंट सीरियस होते हैं। लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, ओके? सो वी आर नॉट रियली सीरियस अबाउट एनीथिंग। हर चीज़ हमारे यहाँ चालू काम के ऊपर चल रहा होता है, ठीक है। अभी AI का ये आया है तो वो भी सबके सब बस AI लग गए, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता, कोई डेप्थ की नॉलेज नहीं है लोगों के पास, ना उनको ये पता है कि कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं यूज़ करना, किस तरह से यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए क्या टूल्स है, किस तरह से कर सकते हैं, बस अब AI का पीछा है। तो कहने का मकसद ये है कि फिक्सिंग योर ओन प्रॉब्लम्स इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल हैव टू डू इट। You do it or you don't do it. AI is here, and after AI there might be something else. We don't know what's next, right? And that is not going to stop. So it's just simple as that. Either you take it or you don't take it.
थैंक यू वेरी मच मैडम। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैं डॉक्टर साहब जी जी दिन में आया पगली रुलाएगी क्या? विद अ ग्रे हेयर, बाल भी नहीं है अब तो, तजर्बे ने ये सिखाया कि दो एस्पेक्ट्स है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। पहली बात तो ये कि तुमने जिस चीज़ की तरफ निशानदेही की है, ये बहुत उम्दा एग्जाम्पल्स हैं इज्तिमाई या कलेक्टिव इनएफिशिएंसीज। हमारे जैसे तुम्हारे बड़े इन जगहों पर बैठे हैं जिन्होंने न रियलाइज़ किया न डिलीवर किया, तो उनकी नस्लें तुम्हारी सूरत में ये भुगतान भुगत रहे। क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू बी लाइक देम? नो। I in person capacity do not want my next generation be like this. Circle of influence and circle of concern जो तुम्हारे इख्तियार में है, that is your circle of influence. Influence with all positivity. And influence can only be possible when you have positive attitude. कामयाब लोग जिम्मेदारी उठाते हैं, नाकाम लोग दूसरों को जिम्मेदार बनाते हैं। Want to be successful, take the ownership। एक दफ़ा सह रोज़े पे जाने का इत्तेफाक, मैं वैसा नहीं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अपील की होगी, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और उसको मैं कोरिलेट करूँगा कि जो ये कहते हैं उसको दूसरे लोग कैसे कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में जो कुछ खराबी है उसकी वजह हम हैं, हमारे आमाल ऐसे नहीं हैं, जैसे आमाल ऊपर जाते हैं ऊपर से फैसले नीचे आते हैं। स्टीफन कोवे, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो भी यही कहते हैं, never blame external factors. It's you who has to bring change inside you. और बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं स्टीफन कोवी, inside out. If you want to bring change outside you, first you have to bring change inside. So it's very simple, inside out. Inside out. So if you want to bring change outside you, you have to bring change inside. तो पहले अपने अंदर तब्दीली, और इंसान की तब्दीली उसकी सोच की तब्दीली। बी पॉजिटिव। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। चलो आपको अपॉर्चुनिटी हम देंगे फर्स्ट ही, पहले ये इंतजार कर रहे थे, इन्हीं को दे देंगे। जी जी थैंक यू सर। सर मेरा नाम गुलाम कादिर है और मुझे 2 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिल्कुल एक सवाल करना है, एक सवाल, दोनों ही क्वेश्चन एक ही सवाल में पूछ रहा हूँ, ठीक है सर? वही नो कि पाकिस्तान में पहले अमीर और गरीब के तालीम में फ़र्क है, ठीक है? तो हम डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो क्या डिजिटल के थ्रू और भी जेब नहीं बढ़ सकती अमीर और गरीब के तालीम में? सही है। दूसरी बात ये कि अगर फ्यूचर में एआई का ही दौर चलेगा, तो क्या स्टूडेंट्स की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और उनकी सोच आगे बढ़ सकती है? इनका आंसर है। वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन सर। एक होती है तालीम और एक होता है शऊर। जो तुमने बात की वो बहुत मानी खेज है, इट्स राइट एंड मीनिंगफुल। टेक्नोलॉजी कम्स लेटर, फर्स्ट इज यू एज ए ह्यूमन एंड योर पर्सनैलिटी, एंड आई एग्री विद यू,
You as a personality is a complete package. AI is merely a tool. As Dr. Saiba in the earlier presentation, she was absolutely right. हम जैसी कमांड देते हैं सिस्टम को, वैसे ही हमें आउटपुट मिलता है. यू आर इम्पॉर्टेंट, योर पर्सनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट. और मेरा अपना एक मुशाहिदा है, 90% से ज़्यादा इंसान की ज़िंदगी उसकी सोच के गिर्द घूमती है. It's not only I, but when I discuss and I share the research findings with you, my subject area is human resource management. And HR perspective or HR gurus say that when we go to hire people, the first and last and most important thing we look into the people is attitude. How do you think? How your mind works? And that's why psychologically the positivity is the most important thing. Critical thinking, you're absolutely right. Dr. Saiba discussed about ethics and values, absolutely right. Right? Your career, your personality, your life, all are important, but AI is merely a supporting factor. You are important, so go to make your personality with all positivity. When I am saying all positivity, means all positivity. पता है क्या, जिंदगी में बड़े चैलेंजेस आते हैं. तुमने दुखती रग पे हाथ रखा, अमीर और गरीब. Classes are here in our society, should not have been, but yes, there are. लेकिन अल्लाह ने सोच सबको दी, और ये आपकी सोच है जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है. ठीक है, तो इसका अमीरी और गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं है. AI एक टेक्नोलॉजी है. You are important as a person, as human. Thank you very much. My question is, what is the ideal balance between automated AI efficiency and human judgment? And human? Judgment. Please repeat your question. What is the ideal balance between automated AI efficiency and human judgment? Okay, quite a challenging question though. I'll try to answer it जितना मुझे समझ आई है. इसका आप कोई बैलेंस नहीं कर सकते कि इतना AI होना चाहिए और इतना ह्यूमन जजमेंट होना चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ह्यूमन जजमेंट शुड प्रिवेल. उसकी मेन रीज़न ये है कि यू कैन नॉट रियली रिलाई ऑन AI. बाज़ मतलब वो आपको ऐसी चीज़ें देता है, बिकॉज अगैन यू नो इट्स अ टूल, जो कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि इट्स अ टूल. वो ऐसी चीज़ें देता है कि मे बी हम लोगों की सोसाइटी में या हम लोगों की डोमेन के अंदर वो चीज़ें काम नहीं कर पाएंगी. ठीक है, सो यू नीड टू एक्चुअली सी कि क्या वो आपको वो चीज़ दे रहा है जो आप चाह रहे हैं, जो आप यू नो इट्स एक्चुअली योर जजमेंट. इट्स अ ह्यूमन जजमेंट विच सीज कि व्हाट इज़ इट दैट आई वांट एंड व्हाट इज़ इट दैट आई डोंट वांट. इसीलिए वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप जो उसको प्रॉम्प्ट दें. अभी मैम ने भी यही बात कही थी कि आप उसको जो बताएंगे वो वही देगा. तो एंड के अंदर इट्स द जजमेंट, इट इज़ द ह्यूमन जजमेंट दैट रियली काउंट्स. जहाँ तक ये बात है कि आप कितना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अगेन इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ मच डू यू नीड इट. अगेन एंड के अंदर ह्यूमन जजमेंट ही सस्टेन करती है और वो ही सबसे ऊपर आती है. Thank you very much. Now we are going to ask the question from Professor Dr. Amir Feroz Shamsi साहब. ये बहुत important questions हैं. Audience, प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जो है ना गौर से सुनना और सर का रिस्पांस जो है ना, उन रिस्पांस के जो है ना रिजल्ट में जो है ना आपसे आप सवाल करें. सर पहला क्वेश्चन है हमारा सर कि हाउ आर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसिंग मॉडर्न जॉब मार्केट्स. जो ग्लोबल जो है कभी जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन आ रही है, तो सर वो मॉडर्न जॉब मार्केट को जो कैसे अफेक्ट करेंगे?
मैं क्योंकि बिजनेस का तालिबे इल्म हूँ तो मैं इसको इसी पर्सपेक्टिव से लेता हूँ. When we talk about changing the job market, and this job market can be local and global. Two aspects are there. One is local job market and second is international or global job market. The subject matter of today's discussion is AI. So one thing is there that AI is a tool, and because of AI, the assumption is that entry-level jobs are going to be eliminated. It's an assumption, could be. Yes, it might be. But most important is that historically this is a common phenomenon. It's not only AI that is bringing such changes either in the local market or in the global market, but it actually happens. जैसे जैसे इर्तिका होता है, evolutions होते हैं, things change. And when things change, the products, the nature of products, the consumption, the identification of the need of the customers and the consumers, the packaging, the surveys, the connectivity, post-sale services, and all these aspects change. Change literature में हम पढ़ते हैं, nobody likes change except a wet baby. समझ आया? अल्लाह अल्लाह. Nobody likes change except a wet baby. अब आई समझ, बड़ी देर से है. तो बेटा द मैटर ऑफ फैक्ट सिनेरियो चेंज हो रहा है. आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो टेबल के जो दूसरी तरफ लोग बैठे हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यू हैव अ डिग्री इन योर हैंड, गुड, द फर्स्ट माइलस्टोन यू हैव अचीव्ड. व्हाट एल्स डू दे लुक फॉर इन यू? जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि रजवी गया तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. अब बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, हम उनसे पूछते हैं एक्सेल आता है? हाँ जी हाँ. ओके. पावर बीआई का नाम सुना है? नहीं. ईआरपी का नाम सुना है? जी. उस पर काम करना आता है? नहीं. सैप का नाम सुना है? सुना है. उस पे काम कभी किया है? नहीं. क्या कर सकते हो? पता नहीं. ऐसे को जॉब देगा कोई? नहीं देगा. You have to put yourself in the shoes of others. साइकोलॉजी में से कहते हैं empathy. Put yourself in the shoes of others. Try to think from the person who is sitting on the other side of the table. And yes, everything is changing in the corporate world. आपका ताल्लुक किसी भी डिसिप्लिन से हो, सोशल साइंसेस के किसी भी डिसिप्लिन से हो, इट इज़ चेंजिंग लाइक एनीथिंग. और ये बच्चे ने सवाल किया था, इट्स नॉट ओनली AI, द पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड. मिसाल के तौर पर, when we talk about interaction of people, do we experience conflicts? The conflict itself carries a negative connotation, but it is nothing difference of opinion. How do you solve these conflicts? How do you take up these conflicts? As a problem or as an opportunity to know the mindset or ideas of others and come up with something new? Scenario change हो जाता है. आप झगड़े से ज़्यादा सीखने की तरफ माइल हो जाते हैं. एक टर्म इस्तेमाल होती है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. अब आप चाहे लोकल मार्केट में बैठे हैं या ग्लोबल मार्केट में बैठे हैं, you have to be a lifelong learner. No matter it is AI,
no matter it is psychology, no matter it is your personality development, no matter what kind of discipline you deal with. As I said again, attitude, mindset, lifelong learning, and adaptability. Thank you.